A very good morning to all the students. I am your SSC teacher Shipra Verma, and today we will start our new chapter, The Establishment of Company Rule. Chapter number 2, History. Introduction. The Mughal Empire was founded by Babur in 1526. It expanded to its full glory under Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. By 1761, the Mughal Empire existed only in name, as its boundaries had disintegrated into regional kingdoms. Bengal, Awadh, and Hyderabad were the three successor states of Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर बाबर ने फाउंड किया था 1526 में. वो अपने पूरे ग्लोरी में, पूरे अपने फुल फॉर्म में अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगज़ेब के टाइम में था. लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता गया और उसके जो सक्सेसर स्टेट्स बने वो थे बंगाल, अवध और हैदराबाद. मर्सेंटिलिज्म. In the 17th and the 18th centuries, the European rulers started protecting their country's trade from foreign competition to increase trade profits. This policy is known as mercantilism. 17th और 18th century में जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने अपनी कंट्री का जो ट्रेड था वो फॉरेन कंपटीशन से बचाने की कोशिश करी और प्रॉफिट्स बढ़ाने की कोशिश में लग गए. इस पॉलिसी को मर्सेंटिलिज्म का नाम दिया गया. English East India Company. It was formed on 31 December 1600. It was granted the right to trade in the East through a charter issued by Queen Elizabeth I. Sir Thomas Roe obtained permission from Jahangir to establish English trading factories. जहांगीर वो पहले राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हमारे देश में ट्रेड करने की परमिशन दी. द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड भरूच by 1619. Expansion of the company. Battle of Plassey, 1757. The battle was fought on the field of Plassey in 1757, and the Nawab Siraj-ud-Dowlah was defeated from Commander Robert Clive. Battle of Plassey was a very significant event as it marked the beginning of the company's rule in the country. Battle of Plassey से ही उस कंपनी का रूल हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ. From the conquest of Bengal, the British moved on to the other parts of the country. After the battle, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. Bengal जीतने के बाद वो दूसरे पार्ट्स पर जाने लगे. Battle of Buxar. Mir Jafar was deposed and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab by the British. Mir Qasim was unable to stop the misuse of free trade by company officials. He abolished internal duties altogether so that Indian merchants could also enjoy the same privilege. The English did not approve of this display of independence and retaliated by replacing him with Mir Jafar again. पहले मिर जफ़र को उन्होंने राजा बनाया था, नवाब बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने मिर जफ़र को मिर कासिम जो कि उसके सन इन लॉ थे उनसे रिप्लेस कर दिया. लेकिन मिर कासिम ने वहाँ के मर्चेंट्स को भी और प्रिविलेजेस देना स्टार्ट कर दिया जो कि कंपनी ऑफिशियल्स को दिए जाते थे. इंग्लिश को ये पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने उसे मिर जफ़र से वापस रिप्लेस कर दिया. Mir Qasim formed a grand alliance with the Mughal Emperor Shah Alam II and Shuja-ud-Dowlah of Awadh. They combined forces met the British force at the Buxar in 1764. The British emerged victorious in this battle. उन्होंने मिलकर बक्सर में एक बैटल करी लेकिन इसमें भी ब्रिटिश जीत गए. The Battle of Buxar made the British the undisputed masters of Bengal. After the Battle of Plassey and Buxar, the British became the real ruler of Bengal. प्लासी और बक्सर की बैटल के बाद ब्रिटिश एक्चुअल रूलर बन गए बंगाल के. द कार्नेटिक वॉर्स. England and French rivalry, which dominated the European political scene, spilled into their colonial positions. 3 Carnatic Wars or Anglo-French Wars were fought between them in India. इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई इंडिया पर अपना अधिकार जमाने के लिए. These referred to as Carnatic Wars 1746 to 1763 because most of the battles were fought in the Carnatic region, which is present-day Tamil Nadu and parts of Karnataka and Andhra Pradesh. The First Carnatic War, 1746 to 1748, took place when the British and the French were engaged in the Austrian War of Succession in Europe. The Treaty of Aix-la-Chapelle ended the First Carnatic War. Through this treaty, the French got Louisbourg region in the North America and British got back Madras.
पहली कार्नेटिक वॉर के थ्रू फ्रेंच को लुइसबर्ग रीजन मिल गया नॉर्थ अमेरिका में और ब्रिटिश को मद्रास वापस मिल गया। सेकेंड कार्नेटिक वॉर। The Second Carnatic War 1749 to 1754 broke out between the French and the English over the issue of succession to the throne of Hyderabad and Carnatic। अब हैदराबाद के थ्रोन के लिए फ्रेंच और इंग्लिश में दूसरी वॉर हो गई। Treaty of Pondicherry was signed in 1754। According to the treaty, France had to return all the captured territories to the England। Third Carnatic War। The Third Carnatic War 1756 to 1763 in India between the English and the French। The war ended in 1763 with the signing of Treaty of Paris। According to this treaty, Chandranagar and Pondicherry were returned to the French। The British emerged victorious in Carnatic Wars and succeeded in eliminating her main rival, the French, from India। सारी कार्नेटिक वॉर्स में ऑलमोस्ट ब्रिटिश ही जीते और इसलिए उन्होंने अपना जो मेन राइवल था, अपना जो मेन दुश्मन था फ्रेंच, उसे इंडिया से एलिमिनेट कर दिया।